Students of 12th class, Namaskar. Today we are going to do chapter number 2nd. We are going to study chapter 2nd, and the name of the chapter is training methods, because training is an important or plays an important part in sports and games. That is why it's a full-fledged chapter in your book. Question is, give introduction, meaning and concept of training. Answer is, various exercises are done by the sports persons to increase sports performance. बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, लोग भी करते हैं, आम जनता भी करती है, आम लोग भी करते हैं तो बट जो स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं वो करते हैं इंक्रीज करने के लिए स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. The knowledge of sports training is necessary for coaches or trainers, but the knowledge of sports training should be there and is necessary for coaches or trainers. Coaches who train the sports persons and trainers also who train the sports persons or players. To acquire excellence in sports and games, systematic and scientific training is needed. So, somebody who wants to have excellence in sports में उसको अच्छी पोजीशन, अच्छा स्टेटस अगर चाहिए तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मेडल्स ले ले या टॉप पोजीशन पर रहे, उसके लिए उसको सिस्टमैटिक और साइंटिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. हर गेम के लिए अलग अलग ट्रेनिंग होती है. ऐसा नहीं है कि वॉलीबॉल के लिए भी वही ट्रेनिंग लगेगी और लॉन टेनिस के लिए भी वही ट्रेनिंग रहेगी. ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता, वो आपको भी पता है. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स अगर होते हैं हमारे पास, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स और इंजरीज ड्यूरिंग स्पोर्ट्स गेम्स इज ऑलवेज देयर. सो देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट ए पर्सन और ए प्लेयर कैन बी इंजर्ड ड्यूरिंग playing some sort of sports on the field. So to save the players from these injuries and accidents, special training is needed for coaches. So to save the players from these sort of injuries while they play on the ground, special training is given to coaches. How to cope up these sort of injuries uh, on the field or accidents on the field. Meaning, what is the meaning of this training method? The word training means the process for preparing of activity or work. Training means the process of preparation of activity or work. प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्टिविटी. कोई काम करने आप जा रहे हो उसके लिए जो हम ट्रेन करते हैं किसी बंदे को. ट्रेनिंग मीन्स टू इम्पार्ट प्रैक्टिकल एज वेल एज theoretical knowledge. Training means whenever we give a practical knowledge or theoretical knowledge to the students, that is called as training. Suppose I am teaching, it is a sort of a training because I am giving the theoretical knowledge. When I shall take you people on the ground and make you learn the rules, regulations of any game, and you yourself would play on the ground under my guidance, under my patronage, that is called as the training, proper training. Both these things are involved, theoretical as well as practical. According to Matt Virju, sports training is the basic form of preparation of sportsmen. Sports training is the basic form of preparation of sportsmen. Then concept and meaning. What is the concept of meaning? To achieve perfection in the field of games and sports, training plays an important role. So training definitely plays an important role. One can avoid injuries to the limbs because while you are on the field, there is every possibility that a player or a sports person might get injured. So for that, training plays an important role. A trained sports person can have less injuries or accidents on the field. One can avoid injuries to the limbs, joints, muscles, or other parts of the body. If a person is trained skillfully, he can avoid these sort of injuries. Sports training is a specialized process, but sports training is a process, specialized process. जैसे डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन होती है, उसी तरह स्पोर्ट्स जो ट्रेनर होते हैं उनकी भी एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस होती है, ट्रेनिंग होती है ऑफ ऑल राउंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन एथलीट. ऑल राउंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन एथलीट. Proper training can prepare as sportsmen.
प्रॉपर ट्रेनिंग कैन प्रिपेयर ए स्पोर्ट्समैन फॉर, किसके लिए प्रिपेयर कर सकता है, कैन प्रिपेयर ए स्पोर्ट्समैन for facing hardships on field during competitions. During competitions, they can face hardships, and the sports person can be prepared. The sports person can be trained for that, so that he can take up his game efficiently, nicely on the ground. So, this is actually the training method. Why training is important? Actually, it gives confidence to the player or the sports person to face difficult situations on the ground regarding his physique, regarding his body. If he injures himself or meets an accident on the ground, how he would cope up with that sort of injury. So, the ability to take on these sort of things on the ground is being taught to the players or the sports persons by a trainer, and the trainer must be very skillful, learned, and he must be proficient in his own profession. So I feel this will suffice today. मुझे लगता है कि इतना अब आज काफ़ी है ट्रेनिंग के बारे में। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप यहाँ पर देखते हैं उसका प्लीज़ और प्लीज़ क्या बनाएंगे आप, उसका आप बनाएंगे नोट्स बनाएंगे। नोट्स बना के आप उसको याद करोगे और याद करके मुझे आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे भेज दोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। प्लीज़ ऐसा करने से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं तो अगर आप वीडियो देखोगे फिर लिखोगे नहीं कॉपी पर, याद नहीं करोगे, दैट विल गिव नो बेनिफिट टू योर पीपल। आप याद रखिएगा, सारे टीचर्स आपको वीडियोस भेज रहे हैं, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो हमें पता नहीं चलता है, आप कुछ सीखते हो नहीं सीखते हो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत आप करोगे तो वो वॉइस रिकॉर्ड जो भेजोगे हमारे पास, हमें पता चलेगा कि आप मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो। सुबह से शाम तक दिन भर बैठे रहना अच्छी बात नहीं है। तो थैंक्स अ लॉट।